Coverage Analysis, Part 1. Coverage analysis is actually about seeing that how much profit is available to cover certain costs and expenses. So we may calculate a ratio for any expense in a business organization. So maybe we can have an operating expenses coverage ratio, or we may be having a marketing expenses coverage ratio, and so on and so forth. But commonly, in coverage analysis, we look at the interest coverage ratio and the debt service coverage ratio. So we'll talk about these two ratios in this coverage analysis and see that what is the significance of these ratios and how these ratios are calculated. So when we talk about coverage or cover, we are referring to the amount of interest that a business has to pay. And to cover that interest, because we know that interest is an expense for a business organization, and to cover that expense, the business should have enough profit to pay that amount of financial cost or interest. So this interest coverage ratio is a relationship of the amount of interest, which in many cases termed as the financial charges or the financial cost, and the profit that is available to pay that interest or financial cost. We have got different types of profits in business. We'll talk about these different types of profits later in our discussion of profitability analysis, but certainly all the profits cannot be used to see what is the interest coverage. The data for interest coverage ratio is taken from profit and loss account, because profit is also there in the profit and loss account, and also the amount of interest or financial cost. How can we benchmark interest coverage ratio? This is something which is a bit interesting. यानी amount of interest किसी business के operations के साथ relate नहीं करती. जैसा कि marketing expenses or the production cost or administrative expenses would be directly related to the operations of the business. Whereas this financial cost or interest is dependent on the capital structure. यानी अगर किसी business में, किसी company के अंदर डेट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा. इसका कोई ताल्लुक कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं है, यानी उन्होंने कितनी सेल जनरेट की या उन्होंने एक्सपेंसेस को कितना कट किया, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट इस पर है कि उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है. तो benchmarking this ratio is bit difficult, considering that every company may have a different capital structure. Having said this, when we look at what is called the prudential regulations of State Bank of Pakistan, and in every country there are such regulations which control the level of debt of a company. यानी जिसके अंदर ये बात तय की जाती है कि किसी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेट इशू करने की इजाज़त है. तो कंसिडरिंग दोज रेगुलेशंस वी कैन से दैट कि कंपनीज जो हैं एक सेक्टर में, यानी एक इंडस्ट्री में मिलती जुलती कंपनीज का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी मिलता जुलता होगा. मगर इस हद तक की बात की जा सकती है. हम हरगिज़ ये श्योर नहीं हो सकते कि अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें या टेक्सटाइल सेक्टर या शुगर इंडस्ट्री की बात करें कि शुगर इंडस्ट्री में हर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर एक जैसा होगा. ऐसा नहीं है. तो इस रेशो की बेंचमार्किंग इतनी आसान नहीं है. ये रेशो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सर्टनली उनके लिए कि जिन्होंने ये इंटरेस्ट रिसीव करना है, यानी लेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो किसी बिजनेस को कर्ज देते हैं और उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करना है. तो अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट काफ़ी हद तक मौजूद नहीं होगा तो वो अपना इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट पे करने में मुश्किल पाएगी. एंड सो it will be a concern of the bank
or the financial institution that the coverage ratio should not fall below a certain level, and the company should be comfortable in paying its interest as well as the loan installments. And from the other side, the management of the company is also concerned about it, that they should be able to pay the interest in time. The first ratio under the coverage ratios is the interest coverage ratio, and I have just said that it is not just the interest, we are saying the total financial cost. और फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ और फीस और चार्जेस भी शामिल होते हैं जो हमारे लोन्स और फाइनेंसिंग और डेट्स के साथ अटैच होते हैं, और उन सब को कलेक्टिवली इन सिंपल वर्ड्स हम इंटरेस्ट कहते हैं या फाइनेंशियल कॉस्ट की टर्म यूज़ करते हैं. वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करते वक्त इंटरेस्ट या फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, और अर्निंग्स बिफोर interest and taxes. We call it EBIT, E-B-I-T, that is earnings before interest and taxes. Question is that why do we use this profit and why not profit after tax? The answer is very simple, that we must consider that amount of profit to see the cover which is before the payment of that expense or that cost. यानी अगर हम फाइनेंशियल कॉस्ट की कवरेज देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल कॉस्ट के पे होने से पहले जो प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उसे हमें कंसिडर करना है. एंड EBIT और EBIT is actually that amount of profit which is before the payment of interest and deduction of income tax. So we can see that the formula is very simple. It is EBIT divided by interest. Suppose we have EBIT value of 500,000 rupees and the interest payment of the year is 200,000. So we divide 500,000 by 200,000 and we get the answer, that is 2.5. And it is 2.5 times. यानी हमारे पास जो प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने के लिए मौजूद है वो हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट से 2.5 गुना है. यानी हम बड़ी कंफर्टेबली, बड़ी आसानी से इस प्रॉफिट में से अपने इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर सकते हैं. So we can say very comfortably that higher is this ratio, better it is for the management, better it is for the lenders. So a higher ratio is considered to be favorable and positive. Is EBIT given in the annual report? Annual report is actually a report published by every company, and it includes not only the financial statements, but it also includes some other details. But for the calculation of ratios, we look at those 4 basic financial statements from where we pick up these values. EBIT figure is not directly given in the annual report generally, but it can be calculated. This amount is calculated by considering the amount of earning before tax and adding the amount of interest in it. So the financial cost or the interest, if it is added in the profit before tax figure, what do we get is the profit before interest and taxes. तो इस तरीके से अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना चाहते हैं किसी कंपनी की और उसकी एनुअल रिपोर्ट से हम डेटा पिक कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो फिगर होगी उस फिगर के अंदर हम इंटरेस्ट की फिगर ऐड करके EBIT की फिगर कैलकुलेट करेंगे एंड देन वील डिवाइड इट विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू गेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो. और ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर कवरेज हमारे पास है. एंड अगेन जस्ट टू रिमाइंड दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट or almost impossible to set a ratio which is a benchmark ratio for this because of the difference in capital structures.